Hello friends, my name is Ankit Bulbunshi and I am an assistant professor in the SAGE group. I welcome you all on the second lecture on the topic types of research. So, there are various types of research which are based on purpose, based on method and based on research. So, before conducting any research, हमें यह मालूम होना चाहिए कि यह ओरिएंटेड किसकी तरफ है. Research is oriented for a purpose or research is based on a method. Based on method, it is divided into three more parts: basic, fundamental or pure research, applied or action, and third is developmental. Developmental. As the name suggests, developmental research is that research when there is a need to get modifications or development in a certain study or topic. Applied or action, this type of research is based on application of a previous methodology in a new form or in a new area. Basic or fundamental or pure research means creating or developing a new idea, conducting a new research based on certain set of theories. So हमारे पास तीन बेसिक डिविजन्स हैं based on purpose, that are basic, fundamental, applied and developmental. Now basic research. Basic research is directed towards developing new or fuller scientific knowledge or understanding of the subject rather than its practical application. Researchers' intellect is triggered and social implications of existing social problems are uncovered. बेसिक रिसर्च में यह होता है कि इसमें हमें नई टेक्निक या फिर नया नॉलेज गेन करना होता है या फिर बढ़ाना होता है, लेकिन इसका किसी भी तरीके से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पार्ट कवर नहीं किया जाता है. यह बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्ट को क्लिक करती है या हमको बहुत ध्यान लगा के इसको समझना पड़ता है क्योंकि एक न्यू होती है, लेकिन ये सोशल इम्प्लीकेशंस या फिर कोई भी सोशल प्रॉब्लम्स जो हैं उनको कभी टच नहीं करती. It remains uncovered. Second is the applied research. It is also known as the action research. Now, in this, it is directed towards the practical application of the knowledge. अब जो भी रिसर्च होती है यहाँ पर यह प्रैक्टिकली अप्लाई की जाती है. थ्योरी में बी सपोर्टेड, मॉडिफाइड और रिवाइज्ड. इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक न्यू थ्योरी भी डेवलप कर सकते हैं यहाँ पे, या थ्योरी को मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग to the area or the concentration of the subject. It covers mostly social science areas. It entails large-scale studies with subsequent problems on data collection. Last one is the developmental research. It refers to the systematic work drawing on existing knowledge gained from research or practical experience that is directed to produce new materials, products and devices, installing new systems, services, and improving substantially that are already produced. So यहाँ पर वह स्टडीज जिसमें ऑलरेडी जो काम हो चुका है बट थोड़ा काम और बचा हुआ है जिससे हम उसको बेहतर बना सकते हैं, टेक्निक बेहतर बना सकते हैं. Likewise, if I give you an example, like we have the engines, like in the mechanical engineering field, we have the engines, we have BS1, BS2, BS3, BS4, and now BS6. So BS6, so we have an engine, we have a systematic set of means apparatus and machines are working on that principle, but after applying the experience and the knowledge gained through experience, we have produced new product and new device which is helpful and which is more helpful, and this type of research is known as developmental research. Now the other research which is based on the method. So first one जो हमने पढ़ा वो था based on purpose, second one is based on method. So method is subdivided into evaluation based on
method of evaluation, description, ex post facto, correlation, historical, experimental. So as the name suggests, evaluation means it can be formative, summative. How we are going to evaluate the research, it can be formative or summative. Descriptive means description in terms of quantity or in terms of quality. In terms of quality, it can be a case study, ethnography, or content. In terms of quantitative, it can be a survey, cross-sectional, longitudinal. This all comes in the quantitative. Now, experimental can be field experimental, where you go out in the field, you collect the data, and then you get the results. Or it can be quasi-experimental. So, first one is historical research. Now, critical investigation of events, developments, and experience of the past, the careful weighing of the evidence of the validity of the sources of information in the past, and the interpretation of the weighed evidence. यहाँ पर हमें जो भी पुराने रिसर्च के लिए जो भी दूसरे लोगों ने काम किया है, अलग अलग सोर्सेज से हम उनको पता करते हैं, उनके बारे में जानते हैं. डेटा इज कलेक्टेड एंड इट इज documented so that a new vision can be developed from that historic research. Descriptive research describes the population characteristics, a study where the major emphasis is on the discovery of ideas and insights. This type comes in descriptive research. Correlation research involves the collection of two or more set of data from a group of subjects with attempt to determine the subsequent relationship between those sets of data. इसका मतलब यह है कि correlation research एक इस तरीके की research है जैसे suppose if we have rainfall and if we have temperature और हम ये कहेंगे कि अगर इतना पानी गिरा है इतना पानी है सपोज वी हैव अ वाटर बॉडी एंड टेम्परेचर ये दो एक अलग अलग डेटा सेट्स हैं. नाउ वी हैव वाटर बॉडी हम कहेंगे अगर वाटर का टेम्परेचर 100 है 101 है 102 है तो वाटर विल ट्राई टू एपोरेट एंड वाटर की जो क्वांटिटी है वो कम होती जाएगी. सो हियर वी हैव अ कोरिलेशन. सपोज इससे क्या कोरिलेशन निकला, इससे कोरिलेशन यह निकला कि विथ इंक्रीज इन or with higher increase in the temperature the water quantity will get diminished या कम हो जाएगी. तो this type of correlation जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है यहाँ पे correlation निकाली गई है. So this type of research conducted is known as correlation research. Other one is ex post facto research in which a systematic empirical inquiry in which the researcher does not have direct control of the इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. यानी हमारे पास कोई ऑब्जेक्टिव है, फिर उस ऑब्जेक्टिव्स को किसी लर्निंग एक्टिविटीज के थ्रू हमको अचीव किया है, फिर उन एक्टिविटीज को हमने एवेल्युएट किया है यूजिंग सर्टेन फॉर्मूलाज, सर्टेन एफिशिएंसी फॉर्मूलाज एंड देन उससे डिसाइड किया है कि यह हमें सक्सेस हुआ है या फेल हुआ है या सिलेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है. सो दिस इज एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च. इवैल्यूएशन रिसर्च इट जजेस द वैल्यू, वर्थ और मेरिट ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्रोग्राम. यानी कोई एक प्रोग्राम है, कोई एक टेक्निक है, कोई मेथड है और हम उसको इवेल्युएट कर रहे हैं, मीन्स कि यह एफिशिएंट है या नहीं है. फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन आर अप्लाइड इन द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, टेक्स्ट बुक एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स. तो यह तब यूज की जाती है या मोस्टली इसलिए यूज की जाती है जो हमें कोई सर्वे है या फिर सर्वे करना है कि सपोज एयरटेल कितने लोग यूज कर रहे हैं या फिर कितने लोगों के पास में 4G मोबाइल है. सो वी विल डू अ सर्वे इन विच वी विल मेक क्वेश्चनएयर या फिर अलग अलग पॉइंट्स होंगे जिसमें पूछा जाएगा कि आप क्या यूज कर रहे हैं, आप आर यू सेटिस्फाइड विद योर टेलीकॉम कंपनी etc. एंड देन दिस whole result will come in a form of a summary or we will get to know the result in the form. This is known as evaluation research. Last one is the experimental research. Experimental research is generally conducted in the laboratory and it involves two groups, experimental group and the control group. So experimental group are those like students which perform the experiment and control group are those which keep an eye on the experiments. So here it is usually done in schools, colleges, in physics, chemistry, etc. So these are the various type of
researches which are conducted and which are being carried out in the various parts of the world. Thank you and stay tuned, keep learning.